Okay. So in the previous class, we have covered basic concepts of electrical circuit, where we have seen about the different types of elements, okay, active passive elements, linear, non-linear, okay, and unilateral, bilateral. Then we have also seen different types of sources, where we have seen that there are mainly two types of sources, independent and dependent sources. So independent sources means the sources which don't depend on any other circuit parameters, and circuit parameters mainly they can be current and voltage. Okay, so if they are not depending on any other circuit parameters, so those sources are considered as independent sources. They are not dependent on any other circuit parameters. But dependent sources are those sources who depends on any other circuit parameters and multiplied with any constant k or g. Okay, so you have seen in the previous class. Now today we will see also we have seen about the ideal and practical sources. So in ideal voltage sources, we know that we have mainly two types of sources. We have voltage sources and current sources. And we have also seen that if we have current, so if we have voltage source, if we have voltage source, so that source will be the equivalent, electrical equivalent of the voltage source will be like this. There will be series resistance that is called as internal resistance of voltage source, and this will be V. Okay, and the across the terminals of voltage source we can connect load. Okay, so in practical voltage source, this RS value will be minimum. Okay, so and the source resistance value will be minimum because it is connected in series with the load, in series with this voltage source. Okay, the value of voltage source. So to reduce the voltage drop across this resistor, we have to take minimum value of series resistance. Okay, that is only the basic principle of series resistance connected to the voltage source. Okay, whereas in current source, in practical current source, we have seen that in practical current source, the resistance, internal resistance of the source will be connected in parallel to the source. If it is a current source and value is I, so the internal resistance RS will be connected in parallel to the I. Okay, and in parallel circuit and across the terminals of this source we can connect load. Okay, so load can be connected across the terminals of this. So here you can see that this is I, there will be output current, here IS will be there, suppose. So I is dividing at this node. Okay, at this node if you will apply KCL, you have already studied KCL and KVL, so you have, I think you have a little bit knowledge about this.
So you can simply apply KCL at this node. So as per the KCL, you know that the incoming current, total incoming current is equal to total outgoing current. So incoming current is here I, outgoing current is I out plus IS. Okay. So it means to maximize I out, to maximize out I out, IS, ideally IS should be 0, right? So ideally IS should be 0 to maximize I out, but in practical application, IS will be minimum. Okay, there will be little current flowing through this the source resistance, internal resistance of the source, but we can keep the value very high. Okay, so RS must be very high so that there will be very minimum leakage current towards this parallel internal resistance of the current source. Okay, so that's why RS will be very high in practical, in the case of current source, practical current source, whereas in the case of practical voltage source, the resistance, series resistance, resistance is connected, internal resistance of the source is connected in series with the voltage source. So that's why the value will be very minimum, so that minimum voltage drop will be there across internal resistance. That is very basic fundamental difference between voltage source and current source. Now, another thing which is very important, conversion of voltage source to current source and current source to voltage source. So in source conversion means we can convert voltage source into current source and current source into voltage source, but the condition must be fulfilled. And first condition is that we know that our voltage source, in voltage source, practical voltage source, this is the internal resistance RS, which is connected in series with the voltage source VS. Okay, this can be converted into a current source in parallel with same resistance RS. Okay, so this voltage source can be converted into a current source in parallel with the same resistance. Okay, RS. And you can calculate the voltage across these two terminals, and voltage across these two terminals Vs will be equal to Is into Rs. Okay, or in other word you can write the source current value Is will be equal to Vs upon Rs, which is written here. Is is equal to Vs upon Rs. Okay, so in source conversion, if you have voltage source given and in series with that voltage source internal resistance is given, you can convert into current source as per the circuit requirement. If you want to convert, you can convert, and if you feel that by converting voltage source into current source, if circuit will be simpler, you can convert it and use it. Okay, so that is for your help while circuit solving. Next is vice versa, we can convert current source to voltage source. Okay, in current source, you know that in practical current source, internal resistance is connected in parallel with the current source. Okay, if current source value is given as Is, internal resistance is Rs, and they are connected in parallel. If this scenario is there in any circuit, if you want to convert into voltage source, and if you feel that by converting voltage source, if circuit will be easy to solve,
can convert into voltage source and you can use it. Okay, so the value of voltage source Vs will be equal to Rs into Is. Okay, and the same resistance Rs will be connected in series with that voltage source. Okay, so this is just a replica of the previous one. You can see that the arrow direction is dual, so it means you can convert same circuit from voltage source to current source, or you can convert from current source to voltage source. So the voltage value will be Vs is equal to Rs multiplied by Is. Okay, so across the terminals of this voltage source you can connect load, right? So source conversion you have to remember, and if you want to use it in solving circuit, you can use it. Okay, next is, while solving circuit, if circuit is complex, if you are observing in the circuit that the passive elements, that is RLC, resistor, inductor, capacitor, there are large number of passive elements and they are connected in any manner. Okay, and if you don't find a series parallel combination in that, so you can check for star delta connection. If there is a star connection or delta connection, you can convert into other. Okay, and if by converting star to delta or delta to star, if circuit is simplifying, you can use it. Okay, so this is for your help also. So star means it is also called as a Y connection. You can see that here resistive element is given. So this is R1, R2, R3. They all are connected in star. Okay, so this is a star connection. It is also called as a Y connection. Okay, you can see the shape is like Y. So there are many ways of representing a star. You can also see that this Y can be represented in T shape. Okay, this is also a star connection, or the reverse Y. You can also see that this is another type of star connection. So there may be three possibilities of star connection. Similarly, in delta, we will see, okay, this is delta connection. Delta is simply this type, or it can be reverse also. It can be this type also. Okay, so you can see there are different three types of delta connection here. Delta can be this type, or this is also a delta connection, where you can see three terminals are separately given. Okay, so in this, if you are observing this delta connection, so there are three end terminals A, B, and C. They are named as A, B, and C. Resistance between A and B is RAB. Resistance between B and C is RBC, and resistance between C and A is RAC. Okay, so in place of resistance, you can also find in some questions inductor and capacitor will be there. Okay, so any passive element can be connected in a star or delta. Okay, if you will find some star delta circuits in various complex circuits. Okay, so how will you will convert into delta to a star or a star to delta? Means if there is a network, delta network is given, and if you want to convert into a star, so how you can convert it? Okay, ultimately
the both circuit will be same. Their means they will be electrically equivalent. So you can see here, first is delta to star transformation or delta to star conversion. Okay, in delta to star conversion, we will convert the circuit which is in delta, we will convert into a star. Means ultimately what we are observing or what we are calculating, see, this is a delta network, this is a star network. Means ultimately we have to calculate the value of elements connected in a star. Okay, and the elements connected in delta must be given. So the elements connected in delta is given. You can see that the three terminals are shown here, A, B, and C. The resistance between A and B is RAB, resistance between B and C is RBC, resistance between C and A is RCA. Okay, so these are the resistances which are connected in delta fashion. Okay, so the same circuit can be converted into a star. We will take same endpoints A, B, and C. Okay, and we will make a common center. Okay, where all elements one endpoint of all elements will be connected together. So you can find, as an example, you can take this point as a common node. In between A and common node, you have to take a resistor. In between C and common node, you have to take a resistor. Similarly, in between B and common node, you have to take a resistor. Okay, so you can see this resistance value you have to find this one and this one. So from delta to star, you can represent delta network into star network, and you can find the values of RA, RB, and RC. Okay, in two arrangements shown, they will be electrically equivalent. Okay, means ultimately we are converting from one to another, so the effect will be same. Okay, there will not be any change in effect. Okay, so they are electrically equivalent. So that's why you can see that the resistance between A and B terminals, if we calculate, so in delta RAB is there, in a star you can see that this neutral is also there. So there are two resistances coming into the picture in a star connection. So since the resistance between A and B for a star is equal to resistance between A and B for delta. Okay, so therefore RA plus RB, we are taking two end terminals A and B. In between end terminals, there are two resistances RA and RB, and both are connected in series. Okay, if we take two nodes at a time, third node we will omit. Okay, third node we are not taking, so that's why in third node no current will flow. Okay, so if in RC there is no current, so that's why we can consider RA and RB connected in series. Okay, so that's why RA plus RB is equal to the resistance between terminal A and B. The resistance in between terminal A and B, what will be the value? Okay, you can see that through this wire there is no current. So if through this wire there is no current, these two resistances will be connected in series. RBC and RCA both will be connected in series, right? And this RAB will be in the parallel with these two series connected resistances. So that's why the equivalent resistance between terminal A and B
will be RAB parallel to RBC plus RCA. Clear? Is it clear to all of you? सर Yeah. हिंदी में थोड़ा समझा दीजिए एक बार। अच्छा, हिंदी में समझा दें। ओके, हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, हमको डेल्टा से स्टार में कनेक्ट करना है, राइट? सो हम दो दो टर्मिनल एक साथ लेंगे। ए और बी को हमने पहले लिया, ए और बी के बीच में आर ए बी कनेक्टेड है इन डेल्टा में, ए और बी के बीच में आर ए और आर बी कनेक्टेड है स्टार में, राइट? सो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच। अगर हम स्टार में देखेंगे, सो अगर ए और बी टर्मिनल लेते हैं तो सी टर्मिनल में कोई करंट नहीं जाएगा, सो इट मीन्स आई इजकल टू 0। अगर यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, सो आर ए एंड आर बी ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, राइट? सो द यस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा? आर ए प्लस आर बी, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? अब हम डेल्टा में देखेंगे, डेल्टा में हमारे पास टर्मिनल ए और बी है, दोनों के बीच में आर ए बी तो दिख रहा है सीधा सीधा, बट ये दोनों रेजिस्टेंस भी आएंगे, ओके? और यहाँ पे हम देखेंगे कि सी के थ्रू जो वायर कनेक्टेड है इसमें अगर कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स कि आर बी सी एंड आर सी ए दोनों ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे, राइट? लेकिन इन दोनों टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में आएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आर ए बी पैरेलल टू आर बी सी प्लस आर सी ए। समझ में आ गया? यस सर। सो उसी तरीके से बाकी के लिए हम कर लेंगे। आर ए और आर बी को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसका एक इक्विवेलेंट पैरेलल कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ये होता है। सो उसी तरीके से आपको कर लेना है आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ओके? इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली द रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स बी सी एंड सी ए, जैसे ए और बी के लिए किया उसी तरीके से बी और सी के लिए करेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी विल बी आर बी सी पैरेलल टू आर सी ए प्लस आर ए बी, and the equivalent resistance between terminal B and C in star network will be RB plus RC। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे। So RB plus RC we can write similarly RBC into RCA plus RAB divided by RAB plus RBC plus RCA। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि तीनों रेजिस्टेंस जो डेल्टा कनेक्टेड हैं, डेल्टा तीनों डेल्टा ब्रांचेज में जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो तीनों रेजिस्टेंस ऐड होंगे, ओके? सो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे ये सेम वैल्यू मिलेगा सारे केसेस में। सो इक्वेशन 3 एंड 4 इज फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल सी एंड ए, ओके? यहाँ तक क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन we have 3 equations, equation 2, 3 and 4, and we have to find out the values of 3 variables। हमको क्या फाइंड आउट करना था? हमको ये फाइंड आउट करना था आर ए का वैल्यू, आर बी का वैल्यू और आर सी का वैल्यू, क्योंकि हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इफ वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम डेल्टा टू स्टार, so we have to find out the values of resistance connected in star। so RA, RB and RC we have to find out in terms of delta connected resistances, means RAB, RBC and RCA। RA, RB और RC का वैल्यू RAB, RBC एंड RCA के टर्म्स में मिलेगा, राइट?
सो यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 2, 3 एंड 4, एंड वी हैव थ्री वेरिएबल दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, दैट इज RA, RB एंड RC. सो उसको फाइंड आउट कर लेंगे. हमारे पास बहुत ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या है कि हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा RA माइनस RC. ओके, RA माइनस RC मिल जाएगा. और उसके बाद RA प्लस RC यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्थ इक्वेशन. सो पहले टू में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद फोर में जोड़ देंगे तो हमको RA मिल जाएगा. So the objective is to find out the value of RA, RB and RC in terms of RAB, RBC and RCA. So by subtracting equation 3 from equation 2 and adding to equation 4, we can obtain equation number 5. So we can obtain equation number 5 by subtracting equation number 2, equation number 3 from equation number 2, and after that by adding to the equation number 4, we will get the value of RA. RA will be equal to RAB RCA divided by RAB plus RBC plus RCA. Means ultimately RA का वैल्यू क्या मिल रहा है? RAB RCA. You can find in the numerator. In the numerator value is RAB RCA. Means we have taken this star connected resistor and the value is coming in the numerator multiplication of these adjacent resistances connected in delta. Okay, RAB RCA ये दोनों आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर में. In the denominator you will find the sum of all delta connected resistances, all three delta connected resistances. So it's a very easy to remember also. Means just you have to take the adjacent elements in the numerator and sum of all elements in the denominator. Okay, so RA will be equal to RAB RCA divided by RAB plus RBC plus RCA. That is equation number 5. Similarly, we can find RB. You will find RB is equal to RBC RAB. RB you can see here. This is RB. RB is RAB multiplied by RBC. RAB RBC divided by sum of all delta connected elements. Similarly, RC will be equal to RCA RBC. RC is this one. RC is RBC RCA. RBC RCA divided by sum of all delta connected elements. So easy way to remember delta to star transformation or delta to star conversion, that any arm in star connection will be the product of two adjacent arms of delta divided by sum of arms of delta. This is the very simple way to remember delta to star conversion. Okay, means any arm of star connection that will be equal to product of two adjacent arms of delta divided by sum of arms of delta. Okay, so likewise in this diagram you can see that this outer one is delta connected network, the inner network is star connected network, RA RB RC. Okay, similar to the previous one, just like this one I have drawn previously. This value is RA, this is RB, this is RC. Similar to this one, you can see RA, that is arm of star connection. This value of RA will be equal to product of two adjacent arms of, okay. So this value of RA will be product of two adjacent arms, that is RAB RCA divided by sum of all arms of delta. Okay, RAB RBC RCA. Similarly, the value of RB can be product of
two adjacent arms means RAB RBC divided by sum of all arm values. Okay, is it clear to you, all of you? Yes, sir. तो ये बहुत काम आएगा जब सर्किट सॉल्व करेंगे उस टाइम पे। कहीं पे ऐसा मिलेगा अगर कि डेल्टा में दिया हुआ है और वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, सो हम अगर उसको स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वहाँ पे हम हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा ये। डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करके फिर उसको हम सॉल्व करेंगे सर्किट को फर्दर। ओके, सिमिलरली अगर आपको कहीं पे सर्किट में दिख रहा है कि स्टार में दिया हुआ है और उसको अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट करके देखते हैं तो वहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम उसको तुरंत डेल्टा में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो सिमिलर वे में हम देखेंगे कि वी हैव थ्री रजिस्टर्स RA RB RC कनेक्टेड इन स्टार। ओके, RA RB एंड RC सेम टर्मिनल पॉइंट अभी भी ले रहे हैं A B एंड C, उसको हम इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं A B एंड C। A और B के बीच RAB है, B और C के बीच RBC है, C और A के बीच RCA है। सिमिलर नेटवर्क है। अब हमको ये मानना है कि हमको स्टार में दिया हुआ है, हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सिंपल है। सो हमारे पास ये वैल्यूज नोन है, ये दिए हुए हैं, मीन्स स्टार में ये वैल्यूज दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज इन डेल्टा, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ RAB RBC एंड RCA। ओके, अभी भी जो इक्वेशन है वो सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों सर्किट इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। ओके, सो सेम जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखे हैं वो इक्वेशन यूज हो जाएंगे अभी भी, राइट। जो हमने डेल्टा से स्टार में इक्वेशन लिखे हैं वो इक्वेशन यूज होंगे इसमें। ओके, सो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में हमारे पास RA RB और RC दिया हुआ है। सो इक्वेशन नंबर 5 6 7 हमने देखा, RA का वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ RAB RBC RCA। सिमिलरली RB एंड RC के लिए दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 में। सो हम रिवर्स में जाएंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 5 बाई 6, 5 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो RA अपॉन RB मिलेगा। RA अपॉन RB विल बी इक्वल टू, यहाँ से RAB से RAB कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको सिंपली मिलेगा RCA डिवाइडेड बाई RBC। सो RA अपॉन RB विल बी इक्वल टू RCA डिवाइडेड बाई RBC। क्लियर। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 8 रिप्रेजेंट करेंगे। RA upon RB is equal to RCA upon RBC. So we can write for RCA, RCA can be written as RA RBC divided by RB. Okay. Similarly, dividing 5 by 7. अब क्या करेंगे, 5 में से 7 को डिवाइड करेंगे। सो RA upon RC हमको मिलेगा, RA upon RC विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से RCA कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में RCA कॉमन है, सो हमको मिलेगा RAB डिवाइडेड बाई RBC। सो RA अपॉन RC इज इक्वल टू RAB डिवाइडेड बाई RBC। RA अपॉन RC इज इक्वल टू RAB डिवाइडेड बाई RBC। ओके, सो वी विल राइट फॉर RAB is equal to RA RBC divided by RC, इक्वेशन नंबर 11। ओके, अब RCA हमारे पास है, RAB है। अब क्या करेंगे कि we will substitute these values of equation number 9 and 11 into 5। ओके, ये 9 और 11 के वैल्यूज को हम 5 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास 9 में RCA का वैल्यू है और 11 में RAB का वैल्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज RAB, दिस इज RCA, ये दोनों का वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी RAB है और यहाँ पे RCA है। और ये देख सकते हैं कि
RCA is coming in terms of RBC. RAB is also coming in terms of RBC. सो RBC यहाँ पे कॉमन हो जाएगा. सो जब इक्वेशन नंबर 9 और 11 के वैल्यूज को, जो कि RCA और RAB के लिए है, इसको अगर इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमको जो वैल्यूज मिलेगा वो ये मिलेगा. दैट इज फॉर RBC वी कैन सॉल्व. ओके, RBC सब में कॉमन हो गया क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया RCA और RAB को. ओके, सो RBC कॉमन मिलेगा. RBC का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था in star to delta conversion. Okay, so first we have evaluated the value of RBC. So RBC will be equal to RB plus RC plus RC divided by RA. Okay, so you can also write the value of RBC. You can also write the value of RBC is equal to RARB plus RBRC plus RCRA divided by RA. Okay, similarly you can also write for RAB. So RAB will be equal to same, the numerator will be same, RARB plus RBRC plus RCRA डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, RC आ जाएगा. यू कैन सी B और C यहाँ पे था, सो डिनोमिनेटर में RA आ रहा है. यहाँ पे A और B दिया हुआ है, A और B के लिए डिनोमिनेटर में RC आ जाएगा, न्यूमरेटर सेम होगा. ओके, सो न्यूमरेटर में क्या है, RARB प्लस RBRC प्लस RCRA मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स कनेक्टेड इन स्टार. ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं RBC, RAB and RCA. Similarly we can write for RC also. Okay, so to easy remembrance you can see that from star to delta transformation, the resistance between two terminals of delta will be equal to sum of star resistances connected to those terminals plus product of same two resistances divided by the third one. Okay, either you can remember like that or like that. Okay, whatever you will find easy you can remember accordingly. So RBC is equal to RB plus RC means same resistances का sum है, plus RBRC again same resistances का product है, divided by third resistance. Okay, so the resistance between two terminals of delta is equal to sum of star resistances connected to those terminals plus product of same two resistances divided by third one. Okay, so you can see like previous diagram, if we have a star connected network given, if we have RA, RB and RC given, we can find out the value of RAB, RBC and RCA. Means this network is connected in delta, so we can find out the values of delta connected elements RAB, RBC and RCA. ओके, जहाँ पे RAB का वैल्यू क्या होगा, RAB का वैल्यू RA इंटू RA प्लस RB प्लस RARB डिवाइडेड बाई RC. ओके, RAB इज इक्वल टू RA प्लस RB प्लस RARB डिवाइडेड बाई RC. थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे डिवाइड होगा. क्लियर?
किसी को डाउट है इसमें? डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ? This conversion will be very helpful for you while solving network. Okay, while solving any circuit or network, means in the circuit you will have to find the voltage and current values. So in those circuits it will be very useful. And if you will find any complex circuit, any complex network where we have to convert, if the circuit will be easy when we convert from delta to star or star to delta, so we will straight away use this conversion principle and we can solve our circuit or we can simplify our circuit. So the first example here you can find, okay, before that, if the element values are same, okay, this is delta to star conversion. So if the element values are same, means suppose RAB is equal to RBC is equal to RCA, और यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 10 ओम दिया हुआ है, ओके, ऑफ RA RB RC, अगर ये इक्वल है सो इसका भी वैल्यू सेम होगा, RA RB RC का भी वैल्यू सेम होगा, ओके. सो RBC RCA are given 10 ohm equally, so it will be 10 into 10 multiplied by 10 plus 10 plus 10 means 100 upon 30, 100 upon 30, or we can write 10 by 3, 10 by 3 ohm. So what is the meaning of 10 by 3 ohm? If the resistances are equal, so from delta to star conversion, if the resistances are equal, from delta to star, resistances are 3. Recording stopped. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी हो गया सही. So we can see here for equal resistances, if the resistances are given for delta connected network, if resistances are given equal, so star connected resistances will be equal to delta connected resistance divided by 3. Sir, screen is not visible. Okay. आंसर रिकॉर्डिंग भी रुक चुकी है. फिर से हमको ये करना पड़ेगा ना, एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन की वजह से फिर से कनेक्ट करना पड़ा, लॉगिन करना पड़ा. I think it is visible now. Okay, दिख रहा है? Yes, sir.
Now I am starting the recording. Recording in progress. Okay. So you can see that if delta connected resistances are given and all are equal, so in star connected resistances you can find Ry is equal to R delta divided by 3. We have seen in this example that we have taken equal values of resistances connected in delta, that is 10 ohm. In resistances connected in star, we are getting 10 by 3, right? So in general, we can write that Ry is equal to R delta by 3. So straight away, the resistances connected in delta will be will be reduced 3 times in star connected resistances if we convert. Okay. Similarly, यहाँ पे आप देख सकते हैं RAB is equal to RA plus RB plus RA RB divided by RC, right? So if we have star connected resistances, RA is equal to RB is equal to RC, that is 10 ohm, अगर ये दिया हुआ है, so हमको फाइंड आउट करना है RAB, RBC और RCA. सो ऑब्वियस है कि अगर रेजिस्टेंसेज इक्वल हैं दिए हुए हैं, सो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेल्टा वाले सारे रेजिस्टेंस भी इक्वल मिलेंगे, राइट? अगर डेल्टा से स्टार में कर रहे हैं तो स्टार वाले में सारे रेजिस्टेंसेज इक्वल मिलेंगे. टू पहले RAB के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो RA प्लस RB मीन्स 10 प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 10, तो कितना आ गया? 30 आ गया. So 30 is 10 multiplied by 3, right? So अगर हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, so R delta will be equal to 3 times of R star. ये होगा जस्ट लाइक प्रीवियस केस, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट है, सो R delta will be equal to 3 times of R star. यही चीज यहाँ पे आया है, R delta is equal to 3 times of R star. Clear? So for different values of resistances, there are some examples given here. In example number 1, you can see that we have to convert the delta network to an equivalent Y network. So delta network is given, the values of RA, RB and RC is given. यहाँ पे डिनोशन अलग हो गया, आप देख सकते हैं टर्मिनल्स A, B and C है. Between B and C the value is RA, between A and B value is RC given here, between A and C RB दिया हुआ है. Okay, so RA is equal to 15 ohm, RB is equal to 10 ohm, RC is equal to 25 ohm. So what will be the values of star connected network? कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले बताया, डेल्टा से स्टार में यहाँ पे एक कॉमन नोड लिया जाता है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, और इनकी वैल्यू फिर हमें फर्दर कैलकुलेट करनी है. अगर ये n है, सो हमारा ये RBN होगा, ये होगा RAN और ये होगा RCN. ओके, सो फ्रॉम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन वी नो दैट, एक के लिए हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं,
RAN इज इक्वल टू, हमको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क लिखना है. ओके, सो स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस RAN, the value of star connected resistance will be equal to, न्यूमरेटर में रहता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एडजेसेंट आर्म वैल्यूज. So RAN will be equal to RB into RC divided by sum of all delta connected resistances. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? RB RC that is 25 into 10 divided by RA का वैल्यू है 15, 15 plus 10 plus 25. ओके, ये कितना हो जाएगा? 250 divided by 50, that is 5 ohm. We are getting RAN 5 ohm. Okay, similarly we can find out the values of other star connected resistance also. Clear? सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes. In example number 2, you can find this type of problems. I think you have also solved the equivalent circuit, means equivalent resistance between two terminals while preparing for JEE exams. Okay, आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था. Yes, sir. और वहां पे आप करंट फ्लो करा के सॉल्व करते थे, है ना, कि कौन कौन से ब्रांचेज में कैसा करंट जा रहा है. बट यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है. अगर हम देख रहे हैं कि स्टार डेल्टा कोई नेटवर्क बन रहा है और उससे हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है, तो हम उसको स्टार अगर दिया हुआ है तो डेल्टा में कन्वर्ट करके कर लेंगे, अगर डेल्टा दिया हुआ है तो स्टार में करके कर लेंगे. ओके, सो दिस एग्जांपल्स आई विल शेयर टू यू. वैल्यू इज गिवन based on the star delta conversion rule. You have to solve. Okay, so I will share this file to you, and in Google Classroom only you have to solve and you have to submit. Okay, as an assignment I will give to you. Clear? Rest topic we will start with the circuit solving techniques. Okay, from the next class. So now I am taking your attendance. Ashish Chandra, Abhay Chandra, Present, sir. Aditya RS, Present, sir. Akash Srivastav, Present, sir. Akhilesh Sahu, Present, sir. Akshit Taneja, Present, sir. Anand Kumawat, Present, sir. Ankit Das, Present, sir. Apurva Raj, Arnav Kumar, Present, sir. Avinash Kumar Singh, Present, sir. Ayush Kumar Singh, Present, sir. Gaurav Tiwari, Present, sir. Ishan Singh, Krishna Gupta, Maitri, हाँ कृष्णा, Yes, sir. ओके, मैत्री उपल, Present, sir. मुद्रा गुप्ता, Present, sir. प्रांजय सोनी, Present, sir. प्राची गौतम, Present, sir. प्रज्वल सिंह, Present, sir. प्रियांश राज, Yes, sir. प्रियांशु कुमार, Present, sir. पुलकित सिंह, राहुल, राजीव कुमार पांडे, ऋषभ आर्य, रोहन कुंतल. Present, sir. Sir, Rishabh Arya. ओके,
This is your first class, right? Sir, it's my second. I have not attended the yesterday's class. Yesterday class, and on 14th you have also not attended. Sir, I have attended. Sir, my name was Rohan Kuntal. Okay. S. Rutik Sai. Present, sir. Saket Suman. Samyak Kashyap. present, sir. Present, sir. Saket. Saket Suman. Okay. Samyak Kashyap. Sangram Chakrabarti. Present, sir. Sasank Tripathi. Present, sir. Shubham Ranjan. Present, sir. Shubham Singh. Present, sir. Okay. Srajan Swarankar. Present, sir. Sudhanshu Kumar. Present, sir. Sujit Kumar ji. Sumit Sikarwar. Supriya. Present, sir. Suryansh Verma. Ujjwal Nayan. Present, sir. Utkarsh Kumar Yadav. Present, sir. Vaishnavi. Vedanshi Srivastav. Present, sir. Vishal. Vishal Vesle. Present, sir. Yash Vavaskar. Arnav Kumar. Vinita Bhatia. Present, sir. Sambhavi Srivastav. Shashi Shekhar Mishra. Any other? Okay. Then thank you, and we will again meet you in the next class. Okay. Recording stopped.